अस्सलाम वालेकुम। तो then what happened? Shylock now cried out impatiently, "Be trifle time, I pray, pronounce the sentence." तो ये चीख मारता है कि प्लीज़ मैं अपने लॉर्ड मतलब जो वहाँ पे होता सेंटेंस सुनाने वाला उनको बोलता है कि प्लीज़ आप पनिशमेंट अनाउंस करिए। पोर्शिया आस्क्ड इफ द स्केल्स वे रेडी टू weigh the flesh and she said to the Jew, Shylock, you must have some surgeon by lest he bleed to death। क्या पोर्शिया वॉज अ वेरी क्लेवर वूमन, तो उसने इसको बोला कि हमारे पास स्केल होनी चाहिए, मेजरिंग स्केल, जिससे उतना ही मीट कटना चाहिए जितना कि बॉन्ड में मेंशन किया गया है। और शायलॉक की तरफ बोलती है कि आपके पास तो डॉक्टर होना चाहिए कि वरना ये तो मर जाएगा। तो शायलॉक whose whole intent was that Antonio should bleed to death, it is not so named in the bond. Portia replied, it is not so named in the bond, but what of that? If it were good, you did so much for charity। तो क्या इसको बोलता है वापस जवाब कि नहीं, ये चीज़ बॉन्ड में ना मेंशन नहीं की हुई कि हमारे पास सर्जन होना चाहिए या हमारे पास वेइंग स्केल होनी चाहिए। To this all the answer Shylock would make was, I cannot find it, it is not in the bond। ये खुद ही अपने जाल में फंस गए, बोलता है नहीं ऐसा कुछ मेंशन करके नहीं है। Then said Portia, a pound of Antonio's flesh is thine। क्या बोलती इसका मीट का लोथड़ा, गोश्त का लोथड़ा तुम्हारा है। The law allows it and the court awards it, and you may cut this flesh from off his breast। The law allows it and the court awards it। इसको बोलती है कि तुम्हें इसके मीट के गोश्त के लोथड़े पे हक है, ठीक है। You have to cut it or a court awards you this thing। Again Shylock exclaimed, oh wise and upright judge, Daniel is come to judgment। And then he sharpened his long knife again and looking eagerly on Antonio he said, come prepare। तो ये बड़ा चीखने लगा, बड़ा खुश हो गया कि आज कितनी बहुत अच्छी जजमेंट मुझे मिल गई है। तो एंटोनियो की तरफ मुखातिब होकर बोलता है तैयार करो अपने आप को। टैरी ए लिटिल ज्यू। अब इसको कौन बोलती है? पोसैड पोर्शिया बोलती है थोड़ा सा वेट करिए। देयर इज समथिंग एल्स, दिस बॉन्ड हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, द वर्ड्स आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश। क्या इसको बोलती है कि मेंशन किया हुआ है कि इसमें कहीं पे नहीं लिखा है कि ड्रॉप ऑफ ब्लड आपको मिलेगा, इसमें सिर्फ ये लिखा है पाउंड ऑफ फ्लैश। Now, as it was bit utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood, this wise discovery of Porcia's that it was flesh not blood that was named in the bond saved the life of Antonio and all, admiring the wonderful sagacity of the young counselor। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि अगर आप किसी की उंगली काट रहे हो तो खून नहीं बहेगा। तो इस चीज़ पे इसी वजह से इसके एंटोनियो की जान बच गई। और एवरीवन इन द कोर्ट रूम वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि ये कितनी काइंड, ये कितनी वाइज है, ये आई मीन से कितनी नहीं कितना वाइज है बालथासर। तो शी वाज पोर्शिया। Realizing that he was completely defeated, Shylock turned to Bassanio and asked for 3 times his principal. But as Bassanio came forward with a bag of gold, Portia stopped him and said, Shylock has already refused the money, he can only have the penalty। तो ये आप इसको लगा कि अब मैं मेरी जान बच गई एंटोनियो की, तो मुझे इसको वापस पैसे करने चाहिए। तो he took bag of gold coins and tried to give him, but Portia stopped him and said कि इसने तो रिफ्यूज़ किया हुआ है पैसा लेने से, बस पेनल्टी देनी है। Shylock now said that he was ready to accept his bare principle, but even this Portia refused him. He could take his pound of flesh or nothing. All was now lost for Shylock. He turned away angrily to leave the court, but there was something more that Portia had to say to him। ठीक है, तो इसके हाथ एंड में कुछ नहीं लगा, ठीक है, neither किसी की sympathy nor किसी का love nor किसी की नफरत। And the time he was about to leave the courtroom, so Portia said something. You cannot leave so soon, Shylock. She said, the law has now a hold on you, Shylock. You have plotted against the life of a Christian and a citizen of Venice. According to the law of Venice, the punishment for this crime is death. Besides, half your goods and money will go to the state of Venice and the other half to Antonio, against whose life you plotted। अब पूरा Shylock फंस जाता है। बोलती है कि आपने एक अच्छे सिटीजन के खिलाफ प्लॉट किया हुआ है, उसको बदनाम भी किया, उसकी जान लेने की कॉन्स्पिरेसी की है, तो आप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस के आपसे सब कुछ छीना जाता है। आप यू आर
subjected to death, plus whatever money, whatever property you had, that is divided into two. One goes to the person जिसको आपने मारना चाहा, and second to the state of Venice. This was a terrible blow to Shylock. It was now his turn to beg for mercy. The Duke, who was happy at the way things had gone, was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property, but he would have to give half of it to Antonio. The generous Antonio, however, instead of taking the money himself, suggested that it should be given to Shylock's daughter, who had married a Christian against her father's wishes. जब ये pronounce किया गया sentence, तो it gave a big blow to Shylock. He had come with some other intention and he had to leave everything there. तो ड्यूक वॉज वेरी हैप्पी और उसने ये भी बोला कोई नहीं, मैं इसकी जान बख्शता हूँ, बट जो इसका हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी है वो एंटोनियो को जाएगी. बट एंटोनियो वॉज वेरी जनरस एंड काइंड जेंटलमैन एंड ही टोल्ड द कोर्ट दैट आई जस्ट वांट कि जो मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है इसकी दैट शुड बी गिवन टू हिज ओन डॉटर, शाइलॉक्स डॉटर, नॉट एंटोनियो बट शाइलॉक्स डॉटर, जिसने एक बागी होकर शादी की हुई है.